Indulge in sinful delights. Have you ever wondered how challenger players can turn games that seem extremely doomed into games like this? Have you ever wondered how challenger players can turn games that seem extremely
to the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let us never surrender. May we rise up to the call for the glory and the Hey folks, I'm Andre, Game Director of League of Legends, here to welcome you to Season 2022. On behalf of the entire dev team, thank you for tuning in from around the world to help us kick off the next year of League together. This year, we're focusing on the thing that keeps us coming back to League. Whether you play on PC, mobile, or are a diehard esports fan, we want to give you more ways to join in the competition across League's ecosystem. No matter if your focus is on climbing the ranked ladder, mastering your main, or cheering on your favorite team, there should be something for you to look forward to this season. Now, today we'll hear from folks on League PC, Wild Rift, and Esports, as we share some of our plans for the new year. We've got a lot in store, so let's jump right into it. I'm going to hand things over to the League team, who will share a sneak peek at some of the new champions, skins, and gameplay changes headed your way.
Hey everybody, I'm Riot Brightmoon, here for the gameplay team on League of Legends, and I am thrilled to welcome you all to Season 2022. Let's get things started with a quick recap of the changes we made this preseason. Over the last few years, we've usually used preseason to make big changes to one of League's underlying systems, such as items, runes, or the Elemental Rift. With this preseason, we wanted to look at all of our systems and make smaller, targeted improvements across the board. So, we added some items, like a new tank mythic for supports who want to dive into the action, and a new mage mythic for champs who need some help surviving burst damage. There are also new legendaries for tanks, mages, and assassins. You'll see some adjustments to keystone runes, including lethal tempo, which now grants ramping attack speed and increases your attack range. Glacial Augment fires multiple slow rays that also reduce enemy damage. And Prototype Omnistone has retired. Taking its place is a brand new keystone, First Strike, which amplifies your damage and grants gold if you're the one to, well, strike first. Beyond items and runes, we've also expanded the bounty system with the addition of objective bounties. These give your team additional gold for taking epic monsters or turrets if you fall behind. And finally, my personal favorite, dragons. First up is the new Hextech Dragon, whose soul gives your autos and abilities a chain slow effect. When she takes over the rift, Hextech gates appear in set locations that transport you around the map. And then there's her sister, the Chemtech Dragon. This dragon's soul lets you keep on fighting even after death. And when she putrefies the rift, camouflage zones appear in the jungle. While these changes are expanding systems, rather than overhauling them, they should still have an impact on your games. We're excited to see your new outplays and big brain strategies, especially now that LP's back on the line and Pro Play is kicking off soon. As always, we'll be keeping an eye on things, and we'll continue making adjustments in the months ahead. Now let's talk about some of the new changes you'll see this year. We've been talking about creating more ways to express your personality and achievements as League players for a while now. For some of you, ranked is how you define progress. But for those of you who aren't focused on the climb, there haven't always been good ways to show off your accomplishments. So this year, we're launching a new way for you to express yourself in League. Something that probably looks familiar are the redesigned ranked crests. But if you don't want to intimidate your friends with your challenger crest, or maybe your gold one doesn't really match your favorite icon, then we have good news. You'll finally be able to choose your level border from any of the ones you've already collected. Now let's get to the really new stuff, challenges. Challenges track your progress in League in ways that aren't tied to specific champions, like winning the perfect game, soloing Baron, and even dancing with Shelly as the enemy nexus explodes. Each challenge levels up from Iron to Challenger as you make progress. So if you're the best at sniping dragons from the enemy team, or maybe your vision control is unmatched, now you can finally prove it. You can showcase any 3 challenges you'd like in loading screens and game lobbies, and you can track all of your progress in your profile. There are 5 categories of challenges. Veterancy challenges track stuff you achieve mostly by playing League over time, like earning mastery points, securing first bloods, and dodging skill shots. The next group is expertise. Whereas veterancy gets you points for playing a lot, expertise asks you to do it with finesse. This includes mechanical and technical skills, like dodging multiple skill shots in a row, fully stacking mage eyes before 20 minutes, or stealing the enemy jungler's buffs. Teamwork and strategy challenges reward you for mastermind plays and working together as a team. Winning games with an open nexus, getting kills by roaming, and winning clash games are all good examples. If you like showing off the things you've collected, or maybe you just take pride in being a completionist, then the collection category is for you. Collection challenges include things like unlocking skins and summoner icons, rekindling Eternals, and even progressing through other challenges. And finally, imagination challenges track some of the more unique things you do in League. Hitting snowballs in ARAM, surviving a fight with a single digit of health, and taking down enemies in their own fountain are just a few examples. Like with individual challenges, your performance in each category also ranks up,
from Iron to Challenger. So if you swear you're a mechanical god with moves like Mako, now you have a way to prove it. In addition to these 5 categories, there are also legacy challenges, which are earned by being part of historic league moments or are only progressible during set periods of time. Some challenges track your progress within each season, and there's even one that shows if you're a battle-scarred player who's been here since beta. The progress you make across all challenges feeds into your challenge crystal, which upgrades as you go. Certain challenges also come with regional leaderboards, which work a lot like the ranked ones. There's a limited number of Grandmaster and Challenger slots, so you'll need to keep making progress to hold on to that rank. Finally, you can show the world you've completed some of the more difficult challenges with titles, which are earned when you hit certain milestones. For example, winning a lot with an open nexus will earn you the title The Comeback Kid. Other titles include KDA Player, Flame Horizon, and Unkillable Demon King. All of the identity changes will be rolling out over the next few months, and we'll continue adding more new challenges throughout the year. Before I go, I've got a quick note to share with you on ranked this season. Last year, we softened the ranked reset so that you'd start closer to where you ended the year before. But it ended up being a little bit too soft. Some of you who dove headfirst into ranked started losing more LP than you were gaining because your rank overtook your MMR too quickly. And that sucks. This season, we're resetting ranks to a more traditional degree, and paired with tuning adjustments we made last year, your MMR and LP will stay closer together, making your climb smoother throughout 2022. That's all I have to share with you today. I hope the new year brings you a little joy, lots of LP, and endless fun with friends. Thank you so much for watching. Hey everyone, I'm John, aka Bellissimo, the product lead for personalization and events on League of Legends. Let's jump right into our plans for the new year. Okay, we've been talking about improving League's event passes for years, but it's actually happening in 2022, for real this time. This summer, we're launching a new event pass that should make your progress and rewards easier to follow. Event tokens are still at the heart of the system, but you'll earn from a new rewards track. Play matches and complete missions to make progress, and collect emotes, loot, and essences all along the way. Then, like today, convert your tokens for the rewards that you care about the most, like exclusive chromas or the event's prestige skin. Over the past year, we've experimented with some bigger adjustments, but something that we've heard from you all is that the power to choose your rewards with tokens is something you really like about League's event system. So rather than reinvent the wheel, we focused on making event progress clear and more satisfying. Now, if you were watching closely, you may have noticed a new type of essence in the reward track. Along with the new event pass, we're also going to be completely revamping League's Mythic content, which includes Hextech skins, prestige skins, and gemstones. The new purple essence you saw is Mythic Essence, which will replace gemstones and prestige points as League's main rare currency moving forward. You'll be able to get Mythic Essence in all of the same places you get gemstones and prestige points today, and Mythic Essence never expires. When Mythic Essence launches in a few months, gemstones and prestige points will retire. Until then, the final prestige point shop will remain open, so be sure to spend all your points because they won't transfer over. Gemstones, on the other hand, will be automatically converted into Mythic Essence, so feel free to hoard them to your heart's content. You'll be able to use your Mythic Essence in the new rotating Mythic shop, which has an assortment of different goodies, but 2 main types of skins. We've consistently heard that Hextech skins just really aren't hitting the mark for a skin line that's supposed to be rare and valuable. So we've decided to introduce Seasonal Mythics. Seasonal Mythics will have a new thematic each year. For 2022, we're developing Ashen Knights, where ancient warriors once fought to rid the world of magic, but instead witnessed their kingdom fall to ash, darkness, and ruin. Another thing we've heard from you all is that it sucks if you missed your chance to get a prestige skin for your main. Maybe you took a break from League or just didn't have the time to get Prestige Arcade Caitlyn. When the new Mythic shop launches, you'll finally have a second shot to unlock past Prestige skins. Each month, the Mythic shop will feature a new set of unvaulted Prestiges. You won't find the newest Prestige skins here, but once they've been out for at least a year, any Prestige can show up in the shop. There's also a special callout for 2018 and 2019 Prestige skins. Back then, once an event ended,
those skins were only available through a lucky loot roll. There was no end-of-year chance to unlock them with prestige points. We're going to bring back prestige skins from 2018 and 2019, but to recognize the investment of the OG owners, we're creating an updated version of each of these skins, which will be free for everyone who already owns it. This updated version won't be available in the shop, and it's just a way for us to acknowledge your early commitment. We've heard that prestige skins sometimes feel like fancy gold chromos that just aren't worth the grind. So shortly after the new Mythic shop opens, we're going to be buffing the time and effort we put into prestige skins. This includes a unique splash art and brand new VFX, and other ways to accessorize your prestige skin that'll be released this year. Finally, we're also introducing a new feature called Loot Milestones, which give you bonus rewards from opening set amounts of loot. There are two types of milestones on the way. One is a repeatable track that you can complete over and over by opening masterwork chests. The other is a one-time track with an exclusive prestige skin at the end of it, and is only available alongside smaller events without event passes. Our goal with all of these changes is to make League's Mythic content better for everyone, in terms of clarity, choice, and rewards. There's a lot more detail than what I'm mentioning here, so we'll also be releasing an explainer where you can dig into the nuts and bolts of everything. There are no plans for League of Legends 2, so we're committed to updating the game over time as part of a broader effort to modernize your experience on your favorite champions. Last year, we shipped a major update to Caitlyn, modernizing her base skin, animations, and VFX, as well as most of her skins and splashes. This year, we'll be focusing on Ahri, one of our older yet most popular champs in League. She doesn't have back animations, and the animations that she does have just feel extremely dated, not only for her base skin, but for all epic skins that use this same foundation. You can expect to see a Caitlyn level update for Ahri later this year. That's all I've got for today. Wait, you didn't seriously think I'd leave without showing you some of our skins and thematics that we're working on, did you? In previous years, we've listed out champions that haven't gotten a skin in more than 1,000 days, called the 1,000 Day Club. That list is pretty short today, but we want it to be gone for good. Now, I'm sure there's somebody out there furiously writing up a post in Gangplank Main saying, Riot literally hates this champ. But hold up, let's look at the list of champs that are going to see some love this year. Gangplank, Fiddlesticks, Rek'Sai, Trundle, Rel, Orianna, and the Donger. Of course, there will be more that aren't listed here, but if you're starving for a skin, hang in there. We know that you're counting the days, and we are too. Now, in terms of thematics, we're going to be revisiting a few popular ones this year, like High Noon, Star Guardians, and Bees. We're always looking for opportunities to bring back older universes in new ways. This time around, we found some inspiration looking at an old standalone skin and reimagining it in a world that could exist today. Set in a near future, dying Earth, humanity faces resource shortages and the deadly invasion of an ancient high-tech army. In one final attempt to save themselves, the world bands together to create their only hope for survival. A superpower warrior armed with incredible technology, the Battle Bunny. Anima Squad has everything you'd expect to see in a futuristic thematic, like sleek high-tech armor, powerful warriors, and cute animals. You'll also see a familiar face return in a new state-of-the-art outfit. Speaking of revamping old skins and thematics, we need your help choosing which thematic we should modernize next, similar to what we did with High Noon. So this week, you can vote for which thematic you want to see revamped the most, from Infernal, Gothic, or Arclight. Infernal is all about fire as a power fantasy. If we were to reignite this thematic, we'd want to deepen or expand what that fantasy looks like. Gothic is a thematic that we haven't touched in a decade, before thematics were even really a thing. So we'd really want to create a universe for it, on par with today's skin lines. And finally, there's Arclight. If Arclight wins, we'd want to magnify its core themes of divine light, justice, and order to make it feel even grander. You can vote for which thematic you'd most like to see revamped in the League client this week. Just like last year, even if the thematic you chose doesn't win, it doesn't mean that it's never coming back. Speaking of which, Monster Tamers, the third place in last year's thematic vote, will be coming out later this year. Finally, our first new thematic of the year will be a celebration of the Lunar New Year. Porcelain blends elegant traditional imagery with the ferocity and power of the tiger. In addition to porcelain,
we're also going to be revisiting a well-loved favorite this year. Alright fam, that's it for today. I can't express enough how thankful I am that I get to be here and represent the hard work of our teams. The only reason we're able to continue to invest into League year over year is because of you and your support. Thanks for playing. Hi, I'm Ryan Reeve-Morellis, lead on the Champions team at Riot. I'm here today to talk to you about our plans for Champions in 2022. Now in the last roadmap, I shared that we'd be pushing the next 2 Champion releases into 2022. At the time, we weren't sure how it would impact our schedule, but now we have a clearer picture, so I'd like to share an update. Our goal last year was to release a champion for every lane, with the exception of mid, which would be receiving 2. When we were planning champions for this year, it became clear that we wouldn't be able to target the same goal for 2022, while still giving each champion the time and attention they would need. So we'll be slowing down a little. While we want to get champions out for as many of you as possible, it's more important to us that we release champions when they are ready, even if that means we don't hit a specific quota for the year. Take last year, for example, when we delayed Vex to build out her tech. We were worried about disappointing you all, but when we saw your reaction to her release, we knew we made the right call. We know it feels bad to wait over a year for a new champion to play, so we're still going to aim for a spread of champions for each lane over a multi-year basis. We just might not hit every role every year. We'll probably still make more champions for mid lane, so we can try to hit a good split between mages and assassins. Now let's talk about some of the new champions coming this year. You wanna mess with him? You gotta deal with me first. Again? Oh, come on! Whoa! Gotta hurry! That's my team you're messing with! Lightning in a gun coming through! If Chem Barons couldn't keep me down, no one can. Just a little closer. Woohoo! Got him! Change of plans. Let's make sure we go out with a boom! Wow, intense! Welcome to our stream. I guess Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Not again. So our first new champion this year is Zeri, an electrifying neon-colored ADC from Zon. Zeri's a hyperactive bot lane carry whose kit takes inspiration from shooters, specifically from machine guns and assault rifles. She has a pretty unique playstyle for an ADC. So instead of auto-attacking, her Q is a skill shot that she uses to do everything other bot laners would use their auto-attacks for. Zeri still has an auto attack, it's just not her primary way to farm, do damage, or take objectives. It's meant to be used sparingly at just the right moments. Her auto attacks also count as spells. This means that they can trigger item effects that normally trigger with spells instead of autos. This leads to a rapid fire play pattern that we hope feels unique from other champions. Basically, if you want to play Zeri, my advice is to never stop moving. The next champion we'll be releasing this year is a new enchanter. When we were thinking about the type of support we wanted to make, we looked at the enchanter cast overall.
There were a lot of lighthearted, colorful, good-aligned champions there. And we felt support plays deserve something more sinister and dark to balance out that cheery brightness in the role. We also wanted to make a champion whose theme and kit make support players feel like the boss that they are. All you support players know what I'm talking about. Those damage carries always get all the credit, but it's always been you, behind the scenes. Keeping them alive with your buffs, constantly saving them from certain death. How could they make all those sick plays without you? And if any of you support players out there know what I'm talking about, then I think you're gonna go berserk over this new enchanter. So after the new dark support, I see it. I see everything. The lavender sea. Purple cities cover the land. She rules over it all. What the fuck? My Empress. This is what Runeterra should be, its true form. The city of Belfast shall fall first. Beautiful Remora swimming endlessly through cities of lavender, overwhelming everything in her path, consuming us. We are all saved. where am I? Filming season start? You were kind of rambling, you okay? Yeah, I'm good. Where was I in the script? You were just getting ready to tell us about the new jungler? Oh, yeah, that's right. So after the new support, we've been hard at work on a terrifying new jungler who's ramping up to swarm the Rift later this year. I'll just leave it at that for now, since just talking about it is starting to bring back that uneasy feeling. So that's all for new champions, but what about VGUs? Later this year, we're releasing the champion you all voted for last year, Udyr. We have a dev blog coming out today that dives deeper into his update. But we do have one small change that we wanted to share here. We know that Udyr's antlers weren't really hitting the mark for many of you, even after the tweaks. And once we got them in game, we also realized they weren't really needed for a unique silhouette. So we removed them. Goodbye, antlers. Be sure to check out the dev blog to see all the awesome progress that for you VGU fans out there. We will also have a new vote going live today, where we will once again ask you all to vote for a champion to receive a VGU next year. So Shyvana, Nocturne, and Skarner will be returning, but they'll be joined by some new contenders with Tryndamere and Kog'Maw. Make sure to check out the poll to learn more about why we chose these 5 champions, as well as our design goals for each of them. And that just about wraps it up for what we want to share today. But before we go, here's a quick teaser for a new, very mysterious, non-traditional bot lane champion we'll be whipping out later this year. Thanks so much for watching, and make sure to check out our newest champion Zeri on PBE or when she releases in a few weeks. I'll see you on the Rift. Rift players, like Season 2 and events. In particular, there's one big change headed your For those of you who play League on PC, this update will look familiar. We're making Wild Rift elemental. These plans are in the works, as we're still figuring out the details, but this is what we're thinking so far. In Wild Rift right now, there are 4 elemental dragons for you to defeat. But soon, each game, one element will eventually dominate the Rift, permanently altering the map. Each elemental rift will impact teamfights, vision, and objective control in ways that will shape your team's path to victory differently from one game to the next. For example, the Infernal Dragon knocks down walls and burns away brush. The Mountain Dragon creates new terrain in the jungle. Ocean Dragon sprouts more brush and spawns extra honey fruit. And the Cloud Dragon turns pathways into wind tunnels that increase your movement speed. Like today, each elemental dragon will grant your team unique buffs, but with the elemental rift, if your team is the first to slay 3 dragons, you'll get a powerful advantage called the Dragon Soul, which matches that game's rift.
Taking down an Infernal Dragon will power up your team with bonus attack damage and ability power. If you claim the Infernal Dragon's soul, your autos and abilities will create explosions on impact. The Mountain Dragon will help you stand strong, giving your team bonus armor and magic resist with a soul that protects you with a powerful shield. The Cloud Dragon will let you zip through the rift, granting bonus movement speed and slow resistance. If you claim this soul, you'll move even faster after casting your ultimate. Finally, the Ocean Dragon will help your team recover from battles with passive health restoration. With this soul, your team will get extra healing when damaging enemies. You're probably wondering what our plans are for Elder Dragon. We're still working on how to bring the behemoth to Wild Rift, and we'll know more in a few months. Now let's talk about something you'll get your fists on in patch 3.0. Set is a brawling pit boss with a heart of gold. Just don't tell his mother what he does for a living. With a powerful 1-2 punch, Set will be smashing faces in the Baron lane where it will take more than a few hits to knock him out. Initiate fights with stylish suplexes using enemy champions against their allies. Your chance to flex with Set is coming later this month. But if this beefy brawler isn't to your style, then perhaps a fluffy magical cat is. Yumi is a playful support who's all about teamwork. She attaches to her allies and becomes untargetable, buffing them with increased stats, heals, shields and zoom-ins. But this kitty's got claws. Yumi can bop enemies for a powerful shield and use her magical book to root them in place, giving her allies the perfect opportunity to land a finishing blow. Then it's time for a quick catnap in a warm ray of sun. Yumi prowls onto Wild Rift next month in the Yumi's Adventure event. We've been working hard to make sure that you all have multiple champions that you really like to play in Wild Rift. Last year, our goal was to release an average of 2 a month, and we beat that with 29.5 champions, if you count Mundo's VGU. Going into 2022, we are going to be slowing down the number of new champions we release by just a bit, but there are still loads more we want to bring over, and our next duo will be joining us from the harmonious islands of Ionia in patch 3.1. Every patch, we introduce a new Wild Pass so you have more rewards to unlock as you play. You'll be able to get your hands on a brand new pass featuring Hexplorer Galio later this month. This will be our last Hexplorer skin for now, as we've got a new thematic we're really excited about for the following pass. Last year, we introduced guilds, with the goal of giving you a way to progress and play with your friends, and a way to earn more rewards together. We also added Guild vs Guild, a competition where guilds fight for different champions and are matched against opposing guilds each week. Guild members can play games to earn points and unlock rewards like baubles, player emblems and Poro coins. Guild vs Guild will be returning this year with next season's competition set in Ionia. You can start fighting for the first lands later this month. For 2022, we're changing how we work with League PC on shared events and thematics. We want to make sure that when we come together, it feels really meaningful, where we each bring our best to the table, even if that means we don't release the same things as each other. That means a few things. For one, we'll still be partnering up with League PC going forward, but in 2022, we might feature different content in our shared moments. This could mean that we create brand new skins for an existing theme, or we might look into the back catalogue to bring over some classics. We're also aiming to release more Wild Rift events this year with less downtime between each one. And now, in classic Wild Rift style, it's time for the skin montage. Finally, our next big event will be a celebration of the Lunar New Year.
We've got loads of stuff in store, including firecracker skins for Timo, Diana, Xinjiao, Set, and Tristana, all of which will also be coming to League PC. The celebration will begin at the end of January. We look forward to seeing you there. Thank you so much for joining us today. We hope you have a brilliant time playing Wild Rift this year. I'll see you next time. Hey everyone, I'm Leo, the global head of Wild Rift Esports. Last year, we started our journey to build a new global sport for mobile players and fans. And we're so proud of the reception Wild Rift Esports received during its 2021 debut. Our first international tournament, the Wild Rift Horizon Cup, took place in Singapore, and it was so exciting to see it all come together. The top teams from around the world competed at the highest levels, and it was incredible to see the first team to win an international competition and raise the Horizon Cup. EKG are the champions of the Horizon Cup! Now, we're ready to kick off 2022 with the first official season of Wild Rift Esports. As we head into Season 1, I want to introduce you to the 8 regions that will be competing this year. These regions will be the foundation for our global competitive structure, bringing their own unique flavor and style to our sport. Let's check it out. Fuck bro, fuck. 아래쪽가 또 뚫렸어요! ये लोग कुछ नहीं अनाउंस करेगा Now moving on to Kaisa, who kill it instincts into the back, but he's only so much you can get done. It's a killing spree. And in this case, no turn in the game. It's their favor. It is a teammate. It is over. They've eliminated 4 members of the last one. That's going to इंडिया तो कुछ नहीं समझ में या ब्रो एशिया इंडिया ने तो hopefully I get very hyped every time I watch this. Now on to more exciting news. We're ready to unveil our competitive format. Regional competitions will run from January to May, featuring the best teams in unique leagues and tournaments around the globe. Regional champions will then qualify to our first official global tournament, the Wild Rift Icons Global Championship, which will take place this summer in Europe. Wild Rift Icons will be the highest level of competitive play and will crown the Wild Rift World Champion. The tournament will feature 24 teams, 8 qualifying straight from regional competitions, and 16 battling through the play-in stage. Following play-ins, the main event will include a group stage and a knockout stage with a big finals day to determine the champion. We'll share more specific details on the location, format, and dates soon. I'm looking forward to epic matches, fresh new faces, and an event you won't want to miss. Before we wrap up, I want to take a moment to thank our fans, players, and teams. The community reception to the sport has been amazing, and we're very encouraged to continue investing and building the ecosystem with you for many years to come. So, let's get started. Wild Rift Esports Season 1 begins now. Hi, I'm Nazala Taha, Global Head of LoL Esports, and welcome to the 2022 season. Pro players around the world are busy preparing for another exciting year of competition, and we're coming off a pretty incredible ride together in 2021. We saw some fresh faces assert their dominance on the spring and summer stages, with 100 Thieves winning their first LCS trophy, and Mad Lions starting a wild run with their LEC win in the spring. It wasn't all new defending champions though. EDG, DK, and PSG Talent also came out on top in their leagues, while teams like Red Canids Kalunga, Galatasaray, and Peace made their Worlds debut. After a COVID-related hiatus in 2020, last year's MSI was our most successful one to date,
with RNG's triumph over DK hitting a record-breaking MSI peak viewership of over 23 million. We missed you, MSI. Welcome back. And of course, we culminated the season with another unforgettable Worlds. We got to see legends rise, rookies make their marks, and the greatest of our sport remind us of why they are just that. The fact that we got to hear Silver Scrapes 4 times in the knockout stage says it all. The finale between 2020 World Champions Damwon Kia and Edward Gaming will no doubt go down in LoL Esports history as one of the most epic showdowns. With EDG's phenomenal wins celebrated by millions in China and around the world. I'm excited and humbled to report that for the 10th year in a row, we beat our viewership record for Worlds. You, our community, you fuel LoL Esports, and we cannot thank you enough for your energy, your insights, and your passion as we collectively continue to grow this sport we love. Now let's talk about our 12th season. After a very exciting off-season, rosters are set, 100+ teams around the world are gearing up, and our 12 regional leagues are ready to kick things off. To get ready for the first split of 2022, we sat down with 5 pros from around the world to find out what they're each aiming to accomplish this season. The full series will be released soon, but we have a sneak peek for you today. Let's take a look. They earned their spot to be here. All of that practice, all of those scrims, they are immediately my favorites for the title already. And we got a banger to start ourselves off. Legendary like all my idols, coming for it all, and I can't wait. Success just called and I got me a date, so I grabbed my ambitions and I'm on my way. Cross the wrong line and this bad news might get burnt like a candle. We too hot to handle, rolled at my feet like a sandal. I only move when I plan to, your moves could get canceled. In the end, it was themselves they had to overcome their own mistakes, their own demons. क्या बोला ये? I only move when I plan to, your moves could get canceled. In the end, it was themselves they had to overcome their own mistakes, their own demons. मैंने क्या सुन लिया ये? And finally, we are thrilled to have North America host Worlds this year. We're getting ready for a true Stay tuned. That's the latest for LoL Esports. Matches kick off next weekend. The hype is real, and we thank all the fans, pros, teams, and partners for joining us for what will undoubtedly be another amazing season. And with that, we've just about wrapped up our stream for today. But the year's just getting started. We've got more ways to celebrate throughout the week with missions, exclusive in-game rewards, and player choice votes. Esports leagues around the world start kicking off their splits next week, and you can claim glory for yourself in Clash next weekend. We still have lots more in store for the year, so we'll keep sharing our plans for League throughout the season too. As always, thanks so much for watching. Best of luck on your climb, and welcome to Season 2022. पता नहीं ए तू गेम खेलेगा सुनी ना ना अरे वाइल्ड रैंक खेलेगा आजा भाई ट्वीट करेगा क्या क्या करेगा मैं भी रिट्वीट करता तू मेरा मैं करता तो उसमें भी रिट्वीट करना बोल दिया ये लोग तो करने नहीं वाले ना इंडिया वाले तो चूतिया है इसको लोग को गेम तो चाहिए बट करने नहीं वाले कोई बड़े लोग हाँ वो तो है
ओ तेरा फ्रेंड लोग भी आया क्या? जी जी हो गया। और क्या होगा? और क्या होगा? जो होने थे हो गए। इंडिया को क्या बताओ, इंडिया को चाहिए गेम। लौड़ा कोई तो यूज नहीं करेगा ट्विटर, ठीक है? उन लोग को लगता है कि Indulge in simple delights with क्या 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 गिफ्ट करूं? What the fuck? Where? Yeah, coming. Yeah. You don't know? No, 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 not coming. I mean, no leaks, no talk. I mean, क्या बताओ, कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, nothing. अरे नहीं, अरे ब्रो, व्हाई नॉट? डेक्स्टर कॉल के सब लोग कॉल कर रहे हैं भाई अभी मेरे को। डेक्स्टर का कॉल आया, रुक कॉल ही पकड़ लेता। सब लोग कॉल कर रहे, रात में मेरे को कॉल करके क्या बोलेगा? रुक जा भाई डेक्स्टर। हेलो। हाँ यही, और क्या देखा? लोड़े लग गए भाई। तेरा 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 आवाज भी स्ट्रीम पे आ रहा है भाई। दबे 2-3 महीना पहले इसे छोड़ दिया। मैं ये बताता बस लगता था कि नहीं आएगा। सब लोग कॉल कर रहे हैं मेरे को, रात में सब लोग भी कॉल करेगा। जिन लोगों से बात हुआ था सबका, पता नहीं क्या होगा भाई। लोड़े लगने वाले भाई। वो लोग को इतना हाइप बनाने का क्या जरूरत भाई? तुम एक गेम को 1.5 साल तक तुम ऐसे ही लोड़े लगे पड़ रहे हो। आई मीन 1.5 साल तक तुम ऐसे ही लंड फेंक रहे हो, कुछ तो कर नहीं रहे। क्या एक्सपेक्ट करो अभी मैं इधर से भी? जिंदगी तो इधर से उधर हो गई। पोके ही कर लो। पोकेमॉन से तो हम लोग का रजिस्टर वगैरह हो गया। अभी टूर्नामेंट में खेलना है। रीजनल हो रहा है क्या? हाँ, कौन सा टूर्नामेंट, ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल? अरे पोकेमॉन भी थोड़ी ऑफिशियल कर रहे हैं वो लोग का भी अनऑफिशियल है। और ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर वो हम लोग। आयरन पोकेमॉन का ऑफिशियल टूर्नामेंट भी आएगा तो देखना, टेंशन से है ना। हाँ वो तो आया। टेंशन इंडिया के लिए कुछ सोचता है भाई उन लोग का, बिकॉज उन लोग का ऑलरेडी गेम है। बीजीएमआई का देख लेना भाई, रिलीज हुआ अभी किससे वो लोग ऐड नहीं करा रहे रे। पूरा एक्टर सबसे ऐड करा रहे हैं वो लोग। अरे वो जो नहीं था ना, उसका नाम क्या है ये? साउथर्न इंडिया वाला। हाँ वो भोसरी वाले से भी करा रहे भाई। क्या बताऊं? सब बोल रहा था बीजीएमआई डेड हो जाएगा, अब वो गेम सब खेलना छोड़ देगा भाई। वो लोग इतना ऐड कराए भाई, इतना फिर से गेम ऑनलाइन आ गया भाई। ये ट्विटर पे पोस्ट डालू? ट्विटर पे सैनिक का पोस्ट किधर गया? मेरे को रीट्वीट करना। सैनिक किधर है भाई? सैनिक भाई किधर है भाई? किधर आर यू? सैनिक का पोस्ट किधर गया? रुक जा। अरे मेरा तो दिमाग खराब है भाई अभी, लिटरली मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लाइक क्या करूं मैं, सोच रहा हूँ अभी मेरे को तो लग रहा है कि ये लोग वैलोरेंट वाले भी, वैलोरेंट का भी। हेलो, वेलकम टू आवर स्ट्रीम गाइस। हाँ डीसी पर आ रहा हो तो डीसी पे आ जा। अरे डेक्स्टर डीसी पे आ सकता है तो आ जा। डीसी पे सब लोग है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ा देर में, थोड़ा देर में आता हूँ। थोड़ा देर में आता हूँ, आधा घंटा में आता हूँ। ठीक है चलो फिर बाय। हाँ डीसी पे आ जाना, हम लोग डीसी पे बैठे हैं। हाँ आई एम लिविंग। अबे लौड़े ऐसा मत बोल गांडू, ऐसा कौन बोलते? अरे वो भी ऐसा मत बोल भाई। लिविंग कुछ नहीं है वो, गेम तो आने वाला। थोड़ा और सबर और क्या।
जिंदगी इधर से उधर हो गई गाइस। बाय द वे, जिसको ट्विटर पे फॉलो करना कर लो, ये मेरा ट्विटर आईडी है, देख लो। दिस इज माई ट्विटर आईडी, आयरन जेपी लोड़ा लसन। कर लो जिसको करना है फॉलो। मैं तो गेम ऑन करके बैठता। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? तररररर, सब लोग चले गए। इसमें तो किधर गए सब लोग? सब लोग का भी डीएम आ रहा है मेरे पे। मेरे को पता नहीं अभी क्या बोलने का। नो वर्ड्स, नो वर्ड्स गाइस। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो, आ रहा है ना? लंड को ही क्या होगा कुछ। कुछ इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, और क्या बोल। कौन? ओ अभी, हेलो, वेलकम। लॉन्च के बारे में वो लोग ऐसे नहीं बोलने वाले, मेरे को तो 100% है। मेरे को ये पता था कि ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है, बट सबको व्यू चाहिए ब्रो, और क्या। वर्ल्ड ट्रिप वालों को भी व्यू चाहिए, ठीक है ठीक। अरे नहीं, मैं क्या, अरे राकेश तेरे को भी आना है तो आजा, डिस्कॉर्ड पे आजा राकेश। सब लोग है इधर में गांड मार रहे हैं एक दूसरे का इधर में। क्या बोला? मैं तो फुल देगा, और क्या। हम लोग का मुंह में बोल रहा है कि पानी डालूंगा बोल के, उसके बाद लौड़े लोग ने पानी नहीं डाला। मैं तो सोच रहा हूँ क्या हुआ ब्रो मेरे साथ, ये मैं सोच रहा हूँ ये क्या हुआ मेरे साथ बोल के। आएगा होपफुली भाई। हम लोग के तो भाई, ए भाई वैलोरेंट कब आएगा मोबाइल? वैलोरेंट मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ, वैलोरेंट मोबाइल कब आने वाला? हाँ, वैलोरेंट मोबाइल कब आने वाला? हाँ वही वेट के लिए ये है। अभी वेलोरेंट तो आया है, दो तीन साल हुए हैं, तो इनके चल ना तो अभी 7-8 साल बाद आएगा वेलोरेंट। Abhijit Roy, welcome to our stream. 1 year more than Valorant for mobile. Exactly. Oof. अरे ये क्या बताऊं भाई, जिंदगी इधर से उधर। टूर्नामेंट जीत गए इंडिया पे। नहीं, it's not like, I mean that like if anyone from like others game पे भी, अभी मेरे को तो ऑफर थे लोग टाइटंस
ये अटैक्स ऑफ टाइटन भाई मेरे को गेम अच्छा नहीं लगता, मैं अभी क्या बताऊँ। अरे ये चैट में क्या बोल रहा मेरा मेरा लाइव स्ट्रीम का चैट में, दे सेइंग ग्लोबल इवेंट फॉर हे वेलकम टू आवर स्ट्रीम ब्रो, नॉट रिलीज इन इंडिया एंड सेइंग ग्लोबल esports. Yeah, obviously. No, bro, they don't care about India. This is the actual fact. हाँ पता है ब्रो, सब लोग वेट कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हम लोग. व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम? इधर में सब लोग पब्लिक पब ऑब्वियसली देखो पबजी सी एस, नॉट मैं सी एस तो नहीं बोलूँगा, पबजी ही एक्चुअल में इंडिया पे जिसका मेन कारण है कि लाइक इंडिया पे सबसे इतना बड़ा स्पोर्ट्स का मार्केट क्रिएट हुआ. उसके बाद धीरे धीरे करके वैलोरेंट आया और अदर्स भी है थोड़े थोड़े. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फ्री फायर भी आया, CODM आया, उसके बाद अदर्स भी है. हाँ हाँ फ्री फायर तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है. तो हाँ काइंड ऑफ ना. अरे प्रो 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 अरे सुनना, मैं भाई मैं वो नहीं बोल रहा कि लाइक इंडिया को देख, अभी इंडिया पे इन लोगों ने देख कुछ तो बात कर रही है. अभी देखो जिन लोग के पास नॉलेज नहीं है तो उन लोग का अलग बात, बट ये तो बहुत सारे बंदे को पता भी है, कुछ लोग को पता भी नहीं है. इंडिया के लिए रायत में ये लोग बेसिकली हम इंडिया के लिए रायत मैनेजर ढूंढने का अबे लाइक ये लोग को सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बिकॉज इन नहीं अरे मैं हाँ हाँ बोल बोल. हम्म. हाँ ऑब्वियसली. मैं ये बंदे ने बहुत सही बोला. अरे वेट 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 लिसन लिसन, चैट पे बंदे ने बहुत सही बोला, रुको. ये बोला नॉट रिलीजिंग इन इंडिया एंड सेइंग ग्लोबल स्पोर्ट्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं ये पोस्ट भाई मैं आज ट्विटर पे ये मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, वेट ऑन. सही बोला. हाँ तो है. अबे नहीं फिर भी लाइक देखो मैं एक चीज बोल सकता, सब लोग तुम नॉट ओनली इंडिया, इंडिया में भाई मैं 100% लिख के देता हूँ, पेपर वगैरह है क्या इधर में, लिख के देता कि लाइक इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कोई बेटा एक्सेस अर्ली में नहीं देने वाले हो. आई मीन बेटा एक्सेस देगा ही नहीं, ठीक है. अरे नहीं मेरे को नहीं नहीं मैं लाइव स्ट्रीम पे भी, हाँ मैं लाइव स्ट्रीम पे. अरे सब लोग मेरे को अभी कॉल किए, सब लोग कॉल कर रहे थे, कॉल करके एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई भाई क्या होगा, इतना तो वो करके रखा, इधर से वो उधर से वो मैंने बोला भाई काम कर, गेम ऑन कर, चिल मार के सोलो जा, फिट कर और क्या. So many games early released in India last year, just need to good ads and other stuff. Why need manager and so why things बहाना बना रहा है वो लोग, ये ना ना. एग्जैक्टली
देखो ये सब में एक बात बोल रहा, ठीक है, अभी जितने भी स्ट्रीम पे मेरे को पता है, आई मीन हाँ इधर में 13 बंदे तो दिखा रहे, तो जितने बंदे भी है मोस्टली मैं एक बात बोलना चाहता, इंडिया में सबको चाहिए वाइल्ड रिफ्ट, बट भाई कोई कंटेंट क्रिएटर को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करेगा, या कोई एथलीट जो अपना स्ट्रीम कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बाद जाके बोलेगा हम लोग को गेम चाहिए, ठीक है, तुम लोग दे विल नॉट रिलीज हाउ द गेम्स। हाँ अरे एक सेकेंड मेरे को स्ट्रीम पे बताने दे। तो इंडिया पे तुम लोग को गेम चाहिए और बहुत सारे हैं, नॉट अगी अबाउट लाइक तुम लोग को बोल रहा, कम्युनिटी में हजारों बंदे हैं, ठीक है, और इंडिया का नाम पहले से ही खराब है, टॉक्सिसिटी, उसके बाद ये हैक्स एंड ऑल चीटिंग चीट्स वगैरह बहुत बार बारह बारह के, जिन लोग को पता है, आई मीन जो लोग नए बंदे छोटे हैं इधर में उन लोग को 90s का बात बोल रहा है, आई मीन जो लोग पहले, आई मीन 2020 के बाद भी जो लोग आए उन लोग को भी पता है, इवन ये 4 सेकंड का बात, इंडिया का रेपुटेशन ऑलरेडी डाउन है इंडिया, आई मीन ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट पे, ठीक है, तो उधर में रह के अभी ये टॉक्सिक नेक्स्ट जो इंडिया का जो सबसे बड़ा मेन इशू है उसको लेके भी बहुत सारे, और सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग घर के लिए खा, आई मीन बहुत सारे हैं घर के खेती में ही खाएगा, बट कोई घर के खेती के लिए उसके लिए पे नहीं करेगा, लाइक ऐसा क्या बोल रहा हूँ, गेम तो सबको चाहिए। हाँ पता है मैंने देखा। भाई ये तो देखो देखो मैं एक बात बोलता, ये नाइट बोर्ड, अरे माँ का भरोसा, ये नाइट बोर्ड का ये सिस्टम कैसे ऑफ करूँ तो थोड़ा बता सकते हैं क्या अभी? लौड़ा भाई किसी को भी बैन कर देता। ओ हाँ सॉरी, अरे सॉरी गाली वाली दे रहा हूँ तो दिमाग ऐसे ही खराब है मेरा, दिमाग आज ऐसे ही खराब हो चुका मेरा, और क्या बताऊँ। नहीं वो लोग हाइप बनाना चाहते हैं, ठीक है, हाइप बना के रास्ते में बंदे को मार देगा, उसके बाद वो लोग खाली मार्ट में गेम लॉन्च करेगा, समझ रहे हो? हाउ ए रुका इधर में और एक अच्छा क्वेश्चन आया, हाउ कैन वी हेल्प यूट्यूबर्स फॉर गेम रिलीज स्टफ, वेट सबसे अच्छा क्वेश्चन बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जिस कंट्री में उस गेम का कोई हाइप नहीं है, उतना अच्छा व्यूअरशिप नहीं है, उस कंट्री में आई मीन एक चीज़ नोटिस करना, तुम लोग अपने दुकान में जब जाओगे, आई मीन मान लो तुम एरिया में अमूल दूध रखते हो, ठीक है, अभी अमूल दूध सब लोग ले रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया, उसके बाद जाके, अरे ब्रो सुन लो थोड़ा, उसके बाद लाइक अमूल दूध रख रहे हो तो अमूल दूध का तुम देख रहे हो कि तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद बट तुम्हारा जो जनता है वो लोकल एरिया का, उसको चाहिए भाई अमूल दूध का पैकेट, समझ रहे हो तुम अभी, तो अमूल दूध का अभी तुम दूसरा कंपनी का अमूल, आई मीन दूसरा कंपनी का दूध लाके तुम अपने एरिया में सेल करोगे तो उस टाइम पे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो अभी तुम्हारा दुकान गया और सामने वाले आई मीन साइड पे और एक दुकान खोल लिया, उसने अमूल दूध का रख लिया, तो बस उसका दुकान चला, तुम्हारा दुकान चला गया, ऐसा है सीन इधर में। अभी तुम किसी भी सीसी आई मीन कंटेंट क्रिएटर है और जो भी एथलीट है, लाइक मेरे जैसे इंडिया पे बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, जैसे क्राउली है, उसके बाद लाइक ये ईशान है, नहीं मैं एथलीट का बात बोल रहा हूँ, जिन लोग का वाई स्ट्रीम करते, ठीक है, ईशान है और भी है, ठीक है, जो लोग एथलीट है, मैं सीसी का नहीं बोल रहा, सीसी तो बहुत सारे सीसी है, मीक है, उसके बाद इग्नाइट है, हम लोग का इधर में इग्नाइट है, बट इग्नाइट तो एक्टिव क्या बताओ, उसका सिर्फ वीडियो आता तो, और या तो उसके बाद इधर में क्या क्या
नो अरे ब्रो जस्ट वेट, अरे इधर में देखे मेरा चैट पे आओ तुम लोग जल्दी जल्दी। अरे देखो देखो, अरे चैट तू चैट पे आना, सब लोग चैट पे आओ। सो अभी अभी देखो देखो, मैं एक बात बोलता, व्यूअरशिप ठीक है सपोर्ट कर रहे हो, रुको रुको, इनकमिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑफ, नो 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 नॉट लाइक दिस, आई मीन नॉट लाइक दैट ब्रो, जस्ट वेट। अभी आई मीन इंडिया देखो, इंडिया पे व्यूअरशिप दिख नहीं रहा, किसी टूर्नामेंट पे है, कोई बोल रहा है कि भाई इसका टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है तो हम लोग नहीं जाएंगे भाई देखने के लिए। अभी इंडिया पे फर्स्ट ऑफ ऑल उतना क्रेज दिख ही नहीं रहा, ठीक है, आई मीन क्रेज मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा, तो उन लोग को प्रॉफिट इधर में नहीं दिख रहा, तो व्हाई दे लॉन्च द गेम, ठीक है। ये एक्चुअल मेरा कहने का बात ही ये जो मैंने बोला ना, वो अमूल दूध वाला सीन इसका है। आई मीन Tencent does not increase या अरे उन लोग को चैट पे बताओ ना, तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो तो चैट पे बताना अभी। इन द वीडियो द पॉइंट इज द रीजन फॉर द स्पोर्ट्स, या एग्जैक्टली तुम्हारा बात मैंने बहुत, ऑल रीजन आर नॉट गुड, इंडिया हैज मोर हाइप देन सम रीजन ऑब्वियसली। इवन रायत को भी ये चीज़ पता है, बिकॉज हम लोग टूर्नामेंट में खेले, उस जगह पे भी बाहर से बहुत बंदे आए, ये चीज़ समझना पड़ेगा। और एक चीज़ लाइक कोई भी क्रिएटर्स को हेट करने के पहले बहुत सारे हैं, देखो सबके हेटर्स है, सबके अलग अलग चॉइसेस है, उस जगह पे नहीं जाने वाला, बट पसंद नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कम्युनिटी पे जाके उन लोग के बारे में सिंग सिंग स्पोर्ट दैट द स्टिल हैव गेम्स। कौन है? नो अरे नॉट लाइक दिस रे, क्या बताओ। ये वो भी है क्या चैट पे? देख देख चैट पर भी। When released in the America and Europe, they have not seen as a part of some more hype this list, but they released in the obviously political issues bro, ऑब्वियसली उधर में उतना क्रेज नहीं है, सच बात बताओ तो। ऑब्वियसली आई मीन क्रेज लाइक इंडिया का जो हाइप है वो इंडिया के अंदर ही। अरे लोल हाँ, चैट पे तू 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 चैट पे बोलेगा। देखो देखो मैं एक बात बोल रहा इधर में, हाउ लॉन्ग यू वांट टू वेट टू लेमाओ, अरे ब्रो हाँ वो तो है, बिकॉज अमेरिका प्ले लोल मोर, अरे नो इट्स नॉट, आई मीन उधर पे लोल ऑब्वियसली लोल तो खेल रहे हैं, इंडिया पे इन लोग का कोई देख नहीं रहा। लाइक यू इन्वेस्ट इन अ कंट्री, ठीक है, या लाइक दिस, या ऑब्वियसली तुम्हारा पॉइंट भी सही है ब्रो, या टिपिकल अर्नब सही बोला। हाँ क्या बोल रहा था? हेलो मेरे को लगा मेरा वॉइस गया। आई डोंट नो हाउ यू वांट टू इंडियंस टू प्ले a game that is not out more than Americans when MOBAs are more missions in first place. It's not, it's the pointless of the market, yeah exactly। इंडिया में मैं जब ML खेलता था, ठीक है, ML पे क्या बोलते थे पता है? पबजी वाले आके मेरे को बोलते थे क्या कार्टून का गेम खेल रहा है। और एक चीज़ किसी को ये पता है, TSM जो बना है जिन लोग को सपोर्ट कर देगा, वो बहुत सारे लोग को पता नहीं TSM का नाम किधर से आया था पता है? एक मोबा गेम से आया था जिसका नाम था डोटा 2, ठीक है, हाँ ठीक है, TSM का नाम उधर से आया था, किसी को ये पता ही नहीं। पबजी वालों जो पब्लिक लोग देखो, किसी गेम का वो नहीं, ऑब्वियसली पबजी का बहुत बड़ा एक हाथ है इंडिया पे स्पोर्ट्स को बूम करने के लिए, नॉट ओनली पबजी। या अरे नहीं ब्रो, ये तो गलत ही बोल दिया, ये तो गलत ही बोल दिया ब्रो चैट में, ऐसा तो नहीं हो सकता ब्रो, उस जगह पे तो आलू खोदेगा इधर में।
या काइंड ऑफ हाँ टेंशन सब जगह है। टेंशन को कोई टेंशन भाई क्या बताओ, टेंशन का पावर अलग लेवल पे है। टेंशन कोई इशू नहीं है ब्रो, टेंशन को कोई इशू नहीं है। In North America, more LoL players, but in South America, there are not more MOBA players. They released in country, but Asian they are doing. Bro, hopefully कुछ दिन बाद। एक सेकेंड। पहले बता मेरे को क्या फूक क्या है। देख होप है तेरा, होप है देख होप क्या है पता है। अभी सीजन कंप्लीट होगा ना, जब सीजन कंप्लीट होगा तब एक होप है, एक चांस है लास्ट टाइम वो, तब वो बता दे, वरना जो भाई 2022 अरे नहीं ऐसा नहीं है, रुको भैया, ये गेम क्यों खेल रहा अभी भी? अरे ब्रो गेम हम लोग तो अभी एमएल पे बैक नहीं जा सकते। हाँ हम लोग का है, वेस्ट बंगाल से तो टॉप्स में से हम लोग ही भाई भरे भरे हैं। इंडिया, अरे वेस्ट बंगाल से टॉप्स तो हम लोग ही कुछ भरे भरे, आई मीन कुछ जाने को नहीं। हाँ वेस्ट बंगाल से तो हम लोग ही है भाई। इधर में कौन कौन है? लॉस्ट है, ईशान है, मैं, उसके बाद आई मीन वो अपर लेवल का बात बोल रहा हूँ, जो भी एथलीट्स है। और ये कौन है, इसका नाम क्या था वो? हाँ नेबिल है। उसके बाद इसका भी ये अरे इसका नाम भूल गया भाई। अरे फेनो है। सेंस भी था उस टाइम पे। इफ वी सी ऑल द मोबाइल डोमिनेशन इन मोबाइल गेम्स, तो इंडियन समझते ही नहीं यार। ब्रो इंडिया में तुम गेम का छोड़ दो, ठीक है, तुम कौन सा गेम हो छोड़ दो, बट इंडिया में मोबाइल मार्केट का हाइप, आई मीन हाइप मतलब मोबाइल मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ रायोट के अंदर एक बार घुस गया, ठीक है, तो वो लोग लॉन्च करने वाले, बट वो चीज़ उन लोग के अंदर नहीं घुस रहा, बिकॉज उन लोग को मार्केट के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, दैट्स वाई दे। अरे सुनो, अरे सुन इधर में हाँ, और एक चीज, और एक हाँ हाँ क्या, देखो और एक चीज़, हाँ तूने एक भी सही बोला। देखो अभी कोई एक मेरे को क्वेश्चन किया था, लाइक इंडिया पे जो बंदे हैं, ठीक है, तो वो लोग वाइल्ड रिफ अभी क्यों खेलेंगे? ठीक है, मैं एक चीज़ बोलता, तुम लोग को तो ये पता है, ठीक है, अभी जिसके देखो हम लोग ऐसे बंदे हैं, हम लोग आई मीन ऐसे बारे मीन्स उस टाइम पे हम लोग एमएल के ऐसे टूर्नामेंट खेले आए जिसमें प्राइस पुल 1000 रुपये था, फर्स्ट प्राइस 1000 रुपये, ठीक है, अच्छे टूर्नामेंट, व्यू वगैरह आ रहे हैं, आई मीन यूट्यूबर की फुल पैसे छाप रहे हैं लोग, ठीक है, बट उन लोग का प्राइस मनी 1000 रुपये है। तो उन लोग का, हम लोग ऐसे टूर्नामेंट खेल के आए, ठीक है। नोएस के अभी डेविड है, वो खेल रहा है बैरल लेन हम लोग का टीम पे, आई मीन मैं उसकी टीम पे खेल रहा हूँ। लाइक इंडिया में छोटे छोटे बच्चे जितने पबजी खेलने वाले हैं नहीं, क्या बोल,
अरे अरे सुनो 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 एक सेकेंड मैं ये चीज़ बोलता जो प्राइस मनी का जो है, पहले किसी को पता ही नहीं कैसे क्या स्पॉन्सर होते थे, ठीक है, उतने स्पॉन्सर उतने नहीं थे, तो सीजगो के टाइम पे भी उतने अच्छे बड़े बड़े लेवल पे अमाउंट नहीं होते थे। ऑब्वियसली दे आर होस्टेड थर्ड पार्टी, ठीक है, बट उसके बाद 4 सेकंड का केस हुआ इंडिया से, तो भाई बहुत फुल फुल बूम बाम वाला केस कर दिया इंडिया रीजन को भाई। अरे वो तो ऑफिशियल नहीं करवा रहे ना, दे आर होस्टेड द थर्ड पार्टी। हाँ हाँ, हम लोग भी है, 5 लाख का एक टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है, उसमें रजिस्टर किया हम लोगों ने। हमारा जो अंडरडॉग थे ना, उन लोगों ने उसको फेज में लेके जाएंगे, नहीं देंगे उसको। हाँ, वाइल लिफ्ट लॉन्च ही नहीं हुआ है भाई, खेले अगर तुम खेलोगे नहीं तो कम्पीट कैसे करोगे भाई? प्रॉब्लम तो ये कि ऐसे ऐसे तेरे पास तेरे प्ले स्टोर में गेम है ही नहीं, तो फेज कहाँ से लाएगा भाई? हम लोग ने VPN यूज करके जो ऐप हमारे देश में बैन है उसको यूज करके हम लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। हाँ। मेरे पास गेम डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है, तू फेज के बारे में कैसे बात कर रहा है भाई? वो तो पता है कि भाई एक अभी वो बड़े बड़े वर्क्स है ना, वो खेलने में नहीं आ रहे, कुछ करने में वो दिखा रहे हैं कि भाई वो चाइनीज से बैन कर रहे हैं भाई, समझ लिया? वही होगा थोड़ा कि भाई वो VPN से डाउनलोड करना नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो उसका नाम हैक हो चुका है भाई। अरे देखो देखो देखो, ये इधर में और एक होल्डर होता तो अच्छा होता। कैसे फेज क्रिएट करेगा वाइल लिफ्ट को लेके? मेरा पॉइंट ये है, मैंने बोला ठीक है चल। सुन मेरा बात सुन, तू देख बड़ी बड़ी ओक्स क्यों नहीं आ रही है इसमें, इस सीन में क्यों नहीं आ रही, उसका पता चला कि भाई अंडरडॉग से थर्ड पार्टी भी टूर्नामेंट थोड़ा भी करवा सकता है, बड़ी ओक्स आके भी थोड़ा क्यों नहीं करवाएगी? कि भाई तुम्हें वो प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो VPN डाउनलोड करो, ये करो वो करो, क्योंकि भाई उसका नाम खराब होगा। वो तो नाम खराब का कुछ नहीं है, पबजी हटाओ। अरे रे रे रे, पबजी हटाओ बोलने से कुछ होगा नहीं रे ब्रो। पबजी कुछ उसका पबजी के लिए हम लोग का इंडिया में इतना क्रेज आया। करना क्या है मतलब, देखो अभी CS वाले भी जो खेले थे, मैं एक चीज बोलता, अरे लिसन भाई, ये हेलो, तुम लोग थोड़ा चैट में पढ़ो, एक बंदे ने कमेंट किया यही काइंड ऑफ, इसका भी सही बोला, ये तो सही बोला, हियर माय पॉइंट एज अ इन्वेस्टर। अरे तू देखना इधर में चैट में देख पहले आगे, ये बात सही बोला, ये एक्चुअल में है भाई, सही बोला। भाई उसके चिंता ही नहीं है भाई, तू जितने पैसे पबजी में डाल रहा है ना, उसके इतने पैसे वो सिर्फ प्राइस अमाउंट में देते, समझ गए? तो बोल, उसका पैसे का कुछ चिंता ही नहीं है भाई, रेड्स वाले। मेरे 12 व्यू आ रहे हैं ना मेरे। हाँ, लाइक कितने आए गाइस? बाय द वे लाइक कर दो गाइस, और इफ यू आर ऑन न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब। सही बोले ब्रो, तुम तो टिपिकल अर्नब ब्रो, सही बोले, थम्स अप। या ऑब्वियसली फेकर, वो MVP हुआ था ना, वो MVP उससे $3 मिलियन उससे टूर्नामेंट, या ऑब्वियसली MVP पे $3 मिलियन। अरे देखो ये भी सही बोला, एंड मोर पीपल रिकमेंड मोर सर्वर कॉस्ट, मोर कॉस्ट फॉर इनकम, ऑब्वियसली ये तो है ही। अभी इंडिया में देखो, इन लोगों ने एक चीज़ बोला था मिड ऑफ 2021, नहीं मिड ऑफ 2021 पे इन लोगों ने बोला था सर्वर का इशू हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इंडिया में
स्पेसिफिकली ये लोग सर्वर नहीं होने वाले। आई मीन इंडिया पे बैठेगा ऑब्वियसली, इंडिया के सर्वर पे बांग्लादेश खेलेगा, नेपाल खेलेगा, उसके बाद ये श्रीलंका खेलेगा, पाकिस्तान भी मे भी अंडर आएगा ना, इंडिया का सर्वर के अंडर ही आएगा, समझा? नहीं, अफगानिस्तान को ऐड नहीं करने वाला, अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान वैलोरेंट का जो लाइनअप, वैलोरेंट का जो अरे सुनो सुनो, इंडिया में अरे सुनना, इंडिया नहीं 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 नहीं, वो लोग अफगानिस्तान को नहीं देने वाले 100% में, ठीक है? अभी वो नहीं है, मैं बोल रहा कि इंडिया पे वो लोग जो सर्वर्स देने वाले हैं, उनमें से इंडिया को खुद ही, इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, उन लोग को ये पता है कि इंडिया में क्रेज है, इतना भी प्लेयर है, वो लोग खेलेंगे। और उन लोग को ये भी पता है इतना अमाउंट में प्लेयर इकट्ठा हो चुके ऑलरेडी, और इंडिया पे गेम रिलीज होने के बाद तुम फ्री फायर वाले आएगा, उसके बाद एरिना वाले से बहुत बंदे आएंगे, ठीक है? तो वो लोग भी आने के बाद सर्वर में भाई, सर्वर का भी कुछ होता है भाई, वो तो आई मीन उसके लिए तुमको अच्छा हाँ, अरे सुनना, 3 सर्वर उन लोगों ने बोला था इंडिया के लिए बैठाएगा, अभी बहन चो 3 सर्वर भी कम पड़ रहे, बिकॉज उन लोग को इंडिया को नहीं फुल एरिया देना है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ऑल्सो, बांग्लादेश ऑल्सो, और भी पूरा देगा, ठीक है? तो अभी भाई उन लोग को आई मीन वो लोग इन्वेस्ट करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा। और इंडिया पे देखो देखो, इंडिया पे जिसको पता है, जिसको नॉलेज है, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड ऑल, इंडिया से बंदे को बाहर ही भेजने नहीं दे रहे। अरे नहीं नहीं, इफ यू थिंक ओनली वन मोबाइल इन इंडिया प्रॉपरली नाउ, दैट्स इज क्लैश ऑफ टाइटन्स। नो 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 नो, क्लैश ऑफ टाइटन्स ऑब्वियसली इंडियंस के लिए कुछ किया, बट अरे नहीं नहीं, अरे रुक जा, क्या? नहीं नहीं ना, क्यों क्यों क्यों? क्यों? हेलो, अरे हाँ हाँ बोल, हेलो सैनिक। अरे तूने ट्वीट किया सैनिक, सैनिक तूने ट्वीट किया? हे हेलो सैनिक, ना तू 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 ट्वीट किया? रुक, मैं रीट्वीट करता लाइव स्ट्रीम पे, 1 सेकेंड। अबे रीट्वीट करेंगे भाई, रीट्वीट, और क्या? ए सैनिक, तेरा तेरा ट्वीट नहीं आया? अरे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हेलो ट्वीट, क्या? अबे यार, हेलो भाई ये लोग क्या भाई, कुछ भी टाइम पे कॉल करते। 1 सेकेंड रुकना।
नहीं वो दूसरे वाले फोन में डाल रहा है हेलो अरे सुन आयरन मैं आ जाऊं रुक जा किधर किधर हाँ आ जा मैं तो हुई छोड़ दिया भाई पता मैंने तुझे legit बोल रहा हूं मैं तो COD खेलने वाला हूं भाई मैं मेरा वीडियो पे मैं रिपोर्ट मारने वाला था भाई व्हाट द फक क्या मेरा COD मतलब ये एरना पर मुझे मेरा टीम तो वापस आ गया क्या इधर पे खेलने के लिए खेलने के लिए अरे हाँ कॉम्पिटिटिव खेलने वाले अरे वो तो खेल रहे हैं ऑलरेडी मास्टर रैंक पहुंच चुके हैं खेल रहे हैं इग्नाइट 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 अरे बीच मेरा वो इन्वाइट नहीं है क्या हेलो इग्नाइट अरे वो टीचर पे बैठा है हां अरे ए सैनिक 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 लॉबी बना तेरा तेरा कंटेंट क्या होगा मैं वही तो सोच रहा हूँ भाई क्या करूँ अभी तो वरना COD चलता है दोनों भाई मास्टर चलते हैं चलो आजा अरे वो COD इंस्टॉल किया था भाई अभी मुझे अरे मतलब एक चीज तुम लोग ने अजेंडा में बोल दिया अभी तो वो तो आना है ना क्या बोलते हैं पैच नोटिस और बूस्टेंट का ये मतलब बोल देंगे तो बोल नहीं पैच नोट में नहीं होगा भाई कुछ पैच नोट में सिर्फ वो विकास किंग देगा और सीजन चेंज होगा ना जब जब न्यू सीजन आएगी ना तब थोड़ा वो डिटेल्स निकालेगा तो पैच नोट में नहीं देगा आई थिंक सो 19 तारीख को है पैच नोट और 91 19 बहुत तेरे भाई बहुत तेरे इग्नाइट पोकेमॉन है लाइक हमारे पास ज्यादा तो नहीं है मोबा में तो ज्यादा नहीं है क्या करें इनके 2-3 है अवेलेबल इन प्ले स्टोर नेम COD इंडिया हेलो हेलो ये सैनिक सैनिक व्हाट्सएप एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले क्या किसका ट्वीट कर दिया अभी दिखा दिखा डिस्कॉर्ड पे डाल पता चला मैं भी किसके साथ था আমি কি বলবো ऐसे डाले अपने जनरल चैट से डाल दूं क्या তুমি টেনশন করো না ছাড়ো লাইভ স্ট্রিমে আছি তো আমি টেনশন কি করি ওনার আশা করবো না क्या बोल रहा था उसने क्या बोला मालूम है বলছি কি রুটি আর মিষ্টি দিয়ে দিলাম দুটো রুটি আর মিষ্টি হ্যাঁ পরে তাহলে কি খাবি একটু हाँ मोदी गवर्नमेंट इज लाइक मैड अरे लोल कोई गवर्नमेंट इज अगेन क्या हाँ पता है सब लोग बोल रहे थे मेरे को ए हेलो हेलो ए सैनिक 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 खेलेगा ए सैनिक आएगा तू हेलो सैनिक तो आएगा अभी आजा मैं गेम पे बैठा हुआ है आई एम ऑल्सो बंगाली फ्रॉम त्रिपुरा बंगाली त्रिपुरा वेट वेट ए त्रिपुरा अरे हेलो हेलो अरे अभी अभी ए अभी বাঙালি ত্রিপুরা কোথায় ভাই হ্যাঁ एक बंदा आया एक बंदा वही अरे ये अभिजीत रॉय हाँ बंगाली फ्रॉम त्रिपुरा ओ सॉरी यू आर फ्रॉम त्रिपुरा यू आर बंगाली ओके नाउ आई गॉट इट नाइस ब्रो কেমন আছো
हाँ रैंक ही खेलबो তুই কি খেলবি খেলবিটা কি আমি সৈনিক কিন্তু ব্যারন লোল এ হ্যালো ভালোই আছি তুমি কেমন আছো আছি ব্রো ए सैनिक ए तू क्या खेलेगा ओके ये क्या खेलेगा इग्नाइट क्या खेलेगा सपोर्ट खेलेगा खेल ले MML bro अरे लौड़े हेलो वेलकम टू आवर स्ट्रीम त्रिपुरा इज अ स्टेट ऑफिशियल लीग ओके ओ त्रिपुरा का भी लैंग्वेज बंगाली है क्या ब्रो ओ बंगाली है नहीं समझा ब्रो समझा ओके ओके कॉमेडी कर रहा है भाई कॉमेडी बैन नहीं किया था तो लौड़े लगे गाइस बनाए भी थे हम लोग बनाए भी थे क्या बोल रहा है वेलकम टू आवर स्ट्रीम गाइस फैक्ट चेक माई सेल्फ बंगाली एंड बांग्ला एंड इंग्लिश नो बैन गेम नहीं आ रहा ब्रो मुश्किल है ब्रो क्या बताओ जिंदगी इधर से उधर हो गई ब्रो गेम नहीं आ रहा बोल के ये मैंने बैन नहीं दिया क्या ब्रो व्हाट द फक ये क्या उठाओ एफपीएस तो ऐसे भी लौड़े लगने वाले मेरे एफपीएस के kha'Zix भाई नहीं खेल सकता भाई एफपीएस ड्रॉप होगा वेलकम टू आवर स्ट्रीम बाय द वे गाइस स्ट्रीम को शेयर कर देना डेरियस जंगल नो आई एम अ जंगलर अरे मेरा जो वाला फोन पे डिस्कॉर्ड है ना उससे ये फेस कैम हो रहा है या एग्जैक्टली इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं ब्रो अरे मेरा आवाज थोड़ा लो आएगा तू नहीं रहेगा क्या अभी समझा हाँ रात को मैं और ये इंजू रहेगा मीन जिनोन रहेगा टोपी पहनना बिकॉज हालत खराब है बाल का Once upon a time, on my way, there was a Yeti and a boy. But this time, I get to be the Yeti. Roar! स्ट्रीम लैब से तो एफपीएस अच्छा आ रहा है भाई
वेट लेट मी चेक यार डिस्कॉर्ड का माँ का भरोसा भाई Engage. हेलो हेलो संभाल के किधर है नाइस Enemy slain. Ally slain. ये ब्लू है इग्नाइट इधर आ ब्लू है इधर आ अरे आ जाओ ओ भाई A snowball is never just a snowball. If you believe in magic. लोड़े लग गए गाइस वेलकम टू आवर स्ट्रीम Enemy slain. अरे चलेगा थैंक यू Put some claw into it, Willem. होगा I bet we could have fun over there. कोकून बैक आजा We don't want to hurt you. या ऑब्वियसली ब्रो गैंग हो गया कंट्री डज नॉट हाँ देखा Make way for the Yeti. On my way. You have slain an enemy. A snowball is never just a snowball. If you believe in magic. हाँ सॉरी एविलिन जिंदा है ब्रो गैंग हो गया अरे लौड़े लग गए गाइस Ally slain. अरे तू इधर में था क्या या ग्रेट कंट्री विद द लैंग्वेज लाइक दिस मेरे को ऑब्वियसली ब्रो Willem knows his way. He knows lots of stuff. On my way. मेरा ये पोजीशन तुम लोग को कैसा चाहिए दोनों बताओ चैट पे फेस कैम सामने होगा या पूरा इधर होगा मेरे को बताओ Enemy slain. Danger. ये टॉप से निकले रे Enemy killing spree. Put some claw into it, Willem. थोड़ा लेट हो गया गाइस क्या भी ठीक है Someone out there needs our help. Middle turret is under attack. Ally slain. We don't want to hurt you. स्टार्ट हो गया गाइस पार्टी Bottom turret is under attack. इधर आओ ना गाइस अरे टूट आगे जा वेट कर आगे मत घुसना Enemy slain. अरे लौड़े लग गए भाई मारो अब मेरे को अल्टी मारा था वो Ally slain. Double kill. Attack the dragon. अरे चलेगा वो किल चाहिए किल नीडेड हुआ Shut down. Attack the dragon. I just realized snowballs don't have brakes. अरे जेड Your team has slain the dragon. He knows lots of stuff. हाँ रिकॉल
Welcome to our stream. Actually, the state are not great. A snowball is never It's just okay. a snowball. If you believe in Kinda. magic. Yeah, what he said. Make way for the Yeti. Oh लो लो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अरे मदद कर Shut down. Enemy slain. I bet we could have fun over there. Bottom turret is under attack. You have slain an enemy. अरे लो Ally अबे slain. Make way for the Yeti. Mess with the Yeti and you get the boy. Best friends forever. Middle turret is under attack. I bet we could have fun over there. थोड़ा एग्रेसिव वॉर्डिंग करो गाइस Middle turret is under attack. We don't want to hurt you. रेड अच्छा चल रहा है हम लोग का On my way. He knows lots of stuff. उन लोग को एवलिन भी पता है नाइस वन है एवलिन टॉप में आया हमें जाएगा जा सकता है रिकॉल तो लिया था उसने कहते हुए गाइस स्ट्रीम को लाइक कर देना पता नहीं गेम का तो बोल नहीं सकता देखते हैं होप फॉर द बेस्ट गेम ये लोग ग्लोबली लॉन्च कर दे जून जुलाई तक Make way for the Yeti. बॉटम पे आ रहा ठीक है On my way. Here we go. Bottom turret is under attack. अबे लौड़ा भाई कुछ कर रही है मेरे को ओके बाय अब मैं गया ओके ब्रो बाय बाय शूट कल देखते कल का लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ बातें Enemy slain. Ally slain. गेम तो पता नहीं Double kill. Enemy slain. Top turret is under attack. Never just a snowball. If you believe in magic. Top turret is under attack. फ्लैश उसका अल्टी नहीं है ठीक है उसका अल्टी नहीं है कौन सा ड्रैग है ये ड्रैग चाहिए अभी उसका अल्टी नहीं है ओके Bullet knows the way. अबे लौड़ा टच नहीं हो On my रहा way. I just realized snowballs don't have brakes. उसमें वॉट करियो उसमें I bet we could have fun over there. अबे लौड़ा नाइस वन सनी This is gonna be the biggest snowball. आजा Bullet knows the way. He knows lots of stuff. Your team has stolen the dragon. fuck you You have been slain. Killing spree. Enemy slain. नाइस वन क्लीन अप कर Slain. अरे भाई नाइस वन एडी Enemy ओ slain. नाइस Ally slain. अरे लौड़ा Rampage. हमको नहीं लगता गेम आएगा चीना की पन If you believe in magic. अरे नहीं ब्रो आई एम नॉट लाइक दिस देखते क्या होता है होप फॉर द बेस्ट फिंगर क्रॉस
आ रहा हूँ। अरे अभी स्टार्ट मत कर, थोड़ा वेट करना था। ओबे फाइट भी ले लिया क्या? ये टावर ले ले, टावर ले ले, टावर ले ले, टावर ले ले। He knows lots of stuff. अबे Unstoppable. Get away for the Yeti. नेक्स्ट टावर भी नहीं। Enemy turret destroyed. बैक आ। On my way. Ally slain. Ally slain. अरे मिड लेन जिंदा भी है क्या? Slain. Turret lost. Danger. Okay, finger cross. God bless. Bullock knows the way. Hopefully, bro. He knows lots of stuff. Ally slain. This is gonna be the enemy slain. Ally slain. भाई इसका अल्टीमेट ऑल टाइम रहता है क्या? If you believe in magic. बाकी Danger. तू डर मत इतना डर के मत खेल। भाई मेरे पास है। Just a snowball. If you believe in magic. On my way. Why are you worried? Bullock knows the way. He knows lots of stuff. अबे स्टार्ट करना था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं था। अरे देख। Ally slain. Ally slain. You have slain an enemy. Enemy killing spree. Double kill. Triple kill. देखा। Legendary. Shut down. Attack the dragon. Attack the dragon. Quadra kill. Nice one. ये अच्छा गया। Ace. हाँ देखा, कुछ कर नहीं सकते। Your team has slain the dragon. अरे इधर में आओ ना रे भाई। अबे ये रिकॉल ले रहा है चोदू। Top turret is under attack. Evildoers beware. Enemy turret destroyed. This is gonna be the biggest snowball. अरे लौड़े लग गए भाई। हाँ। Someone out there needs our help. ये थोड़ा रिकॉल लेके आता। गाइस वेट करो। भाई आर्केन सीरीज देखा नहीं ब्रो, उतना टाइम नहीं मिला। आर्केन थोड़ा बहुत देखा था, अर्ली उसके बाद तो नहीं देख पाया। The snowball is
आ रहा हूँ। गैंग फ्लोर है, वो लोग का जेड नहीं है, वो उलफ को पकड़ना है, उलफ को बैक जा। अरे लोड़े लग गए भाई। प्रेशर करना ही है तो करो ना। घुस जाओ मेरे साथ आओ तो कोई। Legendary. Double kill. Legendary. Engage. On my way. ये बैग आ जा। Enemy turret destroyed. On my way. Enemy slain. बैग आ जा। वेलकम टू आवर स्ट्रीम गाइस। भाई मेरा आवाज आ रहा है ना तुम लोग को गाइस? Danger. He knows lots. On my way. This is gonna be the biggest snowball ever. Make way for the Yeti. Attack Baron. Wulip knows the way. He knows lots. ये आजा सैनी। Your team has slain Baron Nashor. एलर ऑल्सो कमिंग ब्रो। एलर ऑल्सो कमिंग। कौन सा रैंक है अभी? एमरल्ड 1 ब्रो। मैं इस सीजन अभी तक रैंक पुश करना स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज टूर्नामेंट वगैरह चल रहा था। Enemy turret destroyed. Killing spree. You have slain an enemy. नाइस वन। अभी एमरल्ड 1 है। अबे ऐसा मत बोल किसी। मैं भी जा रहा हूँ वैसे तो, स्ट्रीम ऑफ करके खाना खाने। क्या करूँ? मैं रात में तो आना थोड़ा। वो ना, वो तो पता है। मैं दिखा था मेरा। रुको ठीक है, जा फिर। हम लोग रात में इधर में रहेंगे डिस्कॉर्ड में। मेरा आईजीएन, एक्चुअल आईजीएन पूरा आयरन जेपी है। क्या? लोग मैं खाना लेके आता। किन लोग को? कौन? अरे वो तो है कम्युनिटी में भरे भरे है। मैं फास्ट फूड से भाई कैसे छुटकारा पाऊँ? कोई आइडिया दे सकते कोई? फास्ट फूड से कैसे छुटकारा पाऊँ भाई? अरे मेरा दाल चावल रोटी।
अबे वो तो हाँ हाँ भाई फास्ट फूड से छुटकारा मिल सकता है तो फास्ट फूड ही मिला सकता है और कोई नहीं। हाँ फास्ट फूड से थोड़ा थोड़ा हेल्दी शुरू करना शुरू कर दो मतलब खाना मतलब और तो क्या चाइनीज क्या नूडल्स वूडल्स खाते तो मैगी खाना शुरू कर दे। मैगी खाता मैं मैगी खाता भाई। नहीं सच में मैगी का टेस्ट उतना वो नहीं रहता क्या बोलते हैं फास्ट फूड इतना उतना ऑयली के मतलब भाई अट्रैक्टिव नहीं रहता। फास्ट फूड मैंने छोड़ दिया था वो जब पहला लॉकडाउन हुआ था मैंने 6 मंथ नहीं खाया जिम ट्रेनर को हायर कर ले ब्रो यार। हाँ साले साले तू फास्ट फूड खा थोड़ा थोड़ा तो सेहत बनेगा तेरा। नहीं मैं भी फास्ट फूड खा करता था यार पहले तो ऑटोमेटिक में मेरा तो नॉलेज ही नहीं है। हाँ एक टाइम के बाद वो खाने का मन नहीं होगा। हाँ फिर मुझे बर्गर बहुत पसंद है भाई बर्गर में नहीं छोड़ता। मेरा को भी शर्मा और ये सब पसंद है खाता तो बहुत रेयरली। मेरे को तो भाई चिकन चलता भाई, जिसको मटन पसंद है उसको तो पता नहीं, मेरे को चिकन पसंद है भाई। ठीक है चल बाय अभी मैं खाना खा के आता हूँ। हाँ बोल सनी क्या बोल रहा? ट्वीट वाले पागल है यार ये भी कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं बोला हमसे गेम है पता है इन लोग को कुछ तो बोलना चाहिए था भाई। बट इतना है कि मतलब इसमें एशियन गेम में रहेगा ऐसा कुछ बोला और टीओटी वैसे भी इजी भी नहीं है यार लेजिट बोल रहा हूँ मैं दिमाग खराब हो गया अभी थोड़ा हाथ लग रहा है मेरा मतलब कंट्रोल आ रहा है मेरा हाथ में बट स्टार्टिंग में बहुत गंदा था मेरा हाथ देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो इसमें अनाउंसमेंट आने के बाद भाई सब लोग मेरे को कॉल कर रहे भाई, बोले भाई क्या करूँ, सब लोग एक ही बात कॉल करके एक ही बात बोल रहे भाई क्या करूँ अभी क्या बोलूँ। मेरा डिस्कॉर्ड का माँ का भरोसा भाई, बार बार माइक म्यूट होता। हेलो सुनाई दे रहा है ना? इन लोग पूरा साल में एक बार तो बोल रहे थे मतलब भाई रिलीज करेंगे कब करेंगे नहीं रिलीज करेंगे इंडिया में आएगा इसी साल आएगा 2022 में आएगा और कब का बाद में भाई इतना हिट दे रहे थे ना काफी था शायद। चलो अपना भी जाते हैं वाइल्ड यासु प्रैक्टिस है, बाय ओके ब्रो सी यू सून। नहीं मर जाएंगे ये याद आएगी मान के लगा दो अभी लगा दो टाइम वाइल्ड पे ऐसे में टाइम तो नहीं लगता भाई मेरे को तो उतना तकलीफ नहीं था बट ये जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे इंडिया में उन लोगों तो जीजी हो गया उड़ा दिया ये जोड़ता कटा है भाई। हाँ फिर क्या भाई वो लोग गिव भी करते हैं टूर्नामेंट के टाइम में और टूर्नामेंट में प्राइज पूल भी रखते हैं कास्टर लोग को भी रखते हैं कास्टर लोग को भी कुछ दे देना पड़ेगा ना स्किन में कोई लोग तो ऐसा है कि कास्टिंग करेंगे एक ही चीज अच्छी है कि मैंने कुछ नहीं खरीदा। अच्छा ऐसा है क्या पर मैंने बहुत सारा खरीदा मैंने कुछ नहीं खरीदा नाथी ये वर्ल्ड ड्रिफ्ट और लीग पीसी का मेरे को सेम ही लग रहा है लीग पीसी में भी ऐसे ही था उधर मतलब कुछ ऑफिशियल सर्वर नहीं था बट एस्पोर्ट्स था उधर भी मतलब इंडिया वाले ही खेल रहे थे। गुड नाइट ब्रो सी यू सून पीस आउट। ये तो मतलब आई थिंक यूजलेस ही है सब्सक्राइब करना टीओटी वाले एटलीस्ट ब्रो गेम का तो पता नहीं यार, गेम आएगा इस साल तो आना चाहिए, ऊपर द बेस्ट। मेरे को चाहता देख ये बोलते मेरे करियर बनाना ना एक बंदा को मैं जानता हूँ मेरे को बाहर के टीम में डाल देगा ठीक है तो चुपचाप बैठ के सीखूंगा कुछ महीने तक सीखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बाहर का मेटा पूरा अलग है इंडियन मेटा तो करती है भाई गैलियो उठाओ हाई सीसी उठाओ खेलो उधर का मेटा अलग ही रहता है स्पीड पुश पे ज्यादा फोकस करते हैं इधर ड्रैगन पे फोकस करते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली इधर गैम पे फोकस करते हैं इधर सिर्फ ड्रैगन फाइटिंग टीम फाइट पे फोकस करते हैं। अनइंस्टॉल तो ब्रो नहीं मानने वाला, हम लोग का इधर में ही सब कुछ है, अभी क्या बताऊं। और
उधर के लोग भाई बहुत अच्छे हैं, पता है तेरे को। मैं मतलब मैं जब खेल रहा था, वो लेजिट बोलता हूँ तू ना अच्छे से भाई इतना गलती कर रहा था मैं, क्योंकि मैं जंगल से बैरन होता, ठीक है, उनकी टीम के लिए। अभी देख Wait 2 minutes. टूर्नामेंट में हारा, ठीक है, टूर्नामेंट में हारा ऑफिशियल वाला, पहला क्वालिफायर हारे, कुछ नहीं बोला, जस्ट इतना बोला देख भाई ऐसा ऐसा है, तेरा इधर इधर थोड़ा मिस्टेक है, बट तू बहुत अच्छा खेल रहा है, हिसाब से ज्यादा तू है, तेरा पिंग कैसा है, तू अच्छा खेल रहा है, चल इतना करके अगला अगला मैं वैसे मिड लेन खेल रहा था पहला क्वालिफायर में, सेकंड क्वालिफायर में बैरन खेल रहा था। उन्होंने बोला कि जस्ट इतना है कि बैरन लेन पे खेलो और सोलो फाइट लेना है तो ले लो, बट टीम को एक बार बता देना लेने से पहला, इतना बोला। और हम लोग इसमें असल में कौन पता है कंट्रोल कौन कर रहा था, पता है अपना सपोर्ट कंट्रोल कर रहा था ये शॉट कॉलिंग। जंगल हम लोग सब लोग नर्वस हो गए थे असल में, टू बी ऑनेस्ट, सब लोग मतलब, पर हम लोग क्वालिफाई तो मतलब टॉप 8 में तो आ गए थे आईकॉन सीरीज में। ऐसा होता है ऑटो 32 टॉप 8 में आ गए, तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। क्या हुआ? चलो गाइस, बाय बाय। ठीक है चलो बाय बाय, सी यू सून। अरे अरे मैं क्या तू, मैं मेरा मैनेजर है, मुझसे बात करूं क्या, बात के टीम में डालने के लिए पीएस या किसी क्या ये कौन सा तेरा डिवाइस अच्छा रहना चाहिए, वो लोग ऐसे नहीं लेंगे। हां समझा। मेरा भी मतलब पिंग अच्छा नहीं था, बट डिवाइस अच्छा था मेरा, कोई इशू नहीं था। क्या बोलते हैं ब्लू, क्या मेरे को लग रहा है मैं उससे बात करके एक बार देखूं, क्योंकि वो तो मेरे को पहले ही बोल रहा था कि भाई तू फिलिपिनो जा, उधर तेरे को टीम मिल जाएगा, तू उधर जंगल भी कर, क्या भी कर, तेरे को मिल जाएगा टीम बहुत सारे। पे करेगा क्या पे? हम लोग लेजिट बोल रहा हूँ, अगर तेरा गेम इधर रिलीज भी नहीं है ना, तो उधर जाके खेल सकते हैं उनके टीम से। बट अभी देख 2022 में अगर टूर्नामेंट नहीं है ना, ये लोग लाइव वो करेंगे, लैंड टूर्नामेंट करेंगे, तो लैंड टूर्नामेंट के लिए थोड़ी ना मैं इधर उधर जाने के लिए टिकट तो शायद मेरे तो ऑर्गेनाइजर को था, जो ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ उनको डालना पड़ता है, बट पता नहीं मेरे से तो नहीं होगा आपको 20 के मतलब जस्ट टिकट पे। हाँ पता है। ऑब्वियसली और का अच्छा होगा तो दे प्रोवाइडिंग टिकट्स एंड ऑल। बट उनके साथ खेलने के लिए ना ब्रो मेरे को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन रैंक पुश कर रहा है, तू भी से रैंक पुश करना। रैंक पुश कर रहे हैं। सीजन 1 2 में तो ऐसे चला जाता था डायमंड, आंख बंद करके एक दो दिन में। हाँ वो तो है, वो तो है। कैसे हर दिन स्ट्रगलिंग। चल मैं चलता, मैं वैसे भी इसलिए जाना है। ठीक है चल फिर बाय। हाँ मैं भी स्ट्रीम ऑफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, सी यू सून, बाय, साइनिंग ऑफ गाइस, पीस आउट। अरे स्ट्रीम पे बोल रहा, साइनिंग ऑफ बोल के कॉमेडी कर रहा। स्टॉप स्ट्रीम, ओके बाय बाय, सी यू सून गाइस।